So very good afternoon to everyone, and thank you for joining us. And the today's webinar is basically on virtual CFO services to hospitals. So I think most of the peoples are aware of what is virtual CFO, but we just want to say this is specific area specific. So if you all are in the field of hospitals or you having any client related to hospitals, so this webinar is very useful to all of you. And thanks for the joining. So first of all, I want to introduce my partner as well over here, Subhas Notyal. So he is also with me from the last 7 to 8 years, and we both are doing virtual CFO services to many hospitals currently. And he's also having some 1 2 points in this webinar. He will also give his insight on the same for all of you. So, Ketan, please next slide. So basically here I want to inform you everyone, CFO and virtual CFO. So I think everyone is aware of CFO in private companies and everywhere. But what is the differentiate the virtual CFO and CFO over here? So basically, CFO is having very high in cost and full-time person, but their virtual CFO is cost-effective and flexible engagement. And availability over here is CFO will be limited in one organization, but virtual CFO having on demand expertise and having multidisciplinary experience because he is handling various hospitals and healthcare center in his field. So he can give better advice than full-time CFO. And skill set is individual expertise based, time based, and multidisciplinary in case of virtual CFO. Scalability is very CFO for scalability is very limited. For virtual CFO is highly scalable. So these are the main thing. And virtual CFO is having team based thing. So where he can give expertise in any area like billing, sales, marketing, and everything. So this is the main difference between CFO and virtual CFO. So three questions are generally there. So why, what, and how? So why hospital need the virtual? So why hospital needs the virtual CFO? Basically, I would say कि जहाँ डॉक्टर्स ह्यूमन हेल्थ को डायग्नोज करते हैं वहाँ पे वर्चुअल सीएफओ मेजर रोल प्ले करते हैं टू ट्रीट द हॉस्पिटल फाइनेंशियल हेल्थ. So basically, main reason why virtual CFO is because virtual CFO diagnose the hospital financials. And what does a virtual CFO does? So basically, virtual CFO build a profitability roadmap to the organization and see the future clearly with his help of experience. So what? And then how? So it is also interesting how virtual CFO do. So I will give some real story over here, real experience, because that is also for doing how this virtual CFO need the experience. So here we have the one turnaround story over here. We are having one of the hospital 35 to 50 bedded, which is loss making, and then we have converted them to we help with the help of virtual CFO that is converted to break even, and now it is profitable. And the structure conversion also happened from partnership firm to private limited, so people can invest by way of equity and all, and then private equity and all. And then third, that hospital is thinking of to expand that 100 bedded hospital to 500 bedded hospital with over a period of 5 to 6 years. So this is the main real experience I have shared because how the virtual CFO help the organizations. So over here, industry, hospital industry. So generally, if you see in market, then hospital industry is having very large this market. So people can have the this kind of services to provide the virtual CFO to hospital, where the two types of industry is there: single specialty and multi specialty. So what is single specialty hospital? So anyone is aware of? So basically, if I would say the single specialty hospital, eye, dental, IVF, hair transplant, these are the hospitals which are single specialty, and they are and the multi specialty is all together. If any hospital have the cardiology, orthopedic, ICU unit, NICU unit all together, then these are the multi specialty hospitals. And if you talk about the revenue stream,
So generally hospitals have three types of revenue streams. So hospital, basically hospital services where they have do surgeries, IPDs, OPDs and all. And second is pharmacy, and third is pathology, radiology and others, food. So these three are the major key revenue stream for the hospitals, and which is consisting of generally hospitals generally 50 to 55%, and the pharmacy is 25%, and the rest is radiology and implants and all. So I would say there are four pillars of hospitals. These four pillars of hospital for financial health. So the out of four pillars, the first is sales growth strategy. Second is smart cost control, and third is MIS profitabilities and cash flows, and fourth is compliance and tax planning. So these are the main four pillars for the profitable organization hospitals. So first is strategy. So I think you all will be interested over here because हर किसी को यही चाहिए कि भाई हॉस्पिटल्स की अगर मेरे क्लाइंट्स हो या मैं अगर हॉस्पिटल रन कर रहा हूँ तो मैं वो हॉस्पिटल का सेल्स को ग्रो कैसे कर सकता हूँ बिकॉज दैट विल ऑल्सो हेल्प इन योर प्रॉफिटेबिलिटी एंड फॉर एक्सपांशन एंड एवरीथिंग सो हियर इन सेल्स ग्रोथ स्ट्रेटेजी के लिए मैं चाहूंगा कि सुभाष भाई आई थिंक आपको आप इंसाइट दीजिए. So I think Jitesh Subhash bhai, bhai, over to you with regard to sales growth strategies. yeah, Jitesh bhai, as what rightly you have said, since the Jitesh bhai is having near about more than 10 to 12 years experience in this specific industry, and as what Jitesh bhai you has very correctly mentioned, the way the doctor diagnose the patient, the same way one CFO, whether he's a CFO, whether he's a virtual CFO of any hospital, he diagnosed the the revenue aspect, who is the technically you can call as a backbone of the hospital, wherein in today's world all the doctors they are into the race of generating the revenue to the hospital. And the virtual CFO, as what very correctly and rightly you said, that he's diagnosing in each and every aspect how the hospital can run into the profitable venture. Every doctor has a dream that his hospital should be a very expanded bed hospital, and he should have a very good kind of the revenue, wherein as what you rightly said, there are the four pillars of the hospitals. Hello, am I audible? Yes, yes, you are audible. Yeah. So there are the four pillars of the hospitals into the financial health. One is the sales strategies. I think one point I would say here, अगर आपको हॉस्पिटल्स का रेवेन्यू अगर ये स्ट्रेटेजी से 15-20% अगर ग्रो नहीं होता है तो हो ही नहीं सकता. यानी जो ये स्ट्रेटेजीज हम शेयर करने वाले हैं उससे आपके हॉस्पिटल के 15 से 20% रेवेन्यू ग्रो हो सकते हैं. वहाँ पे मतलब कोई पॉइंट ऐसे हो सकते हैं जो आप फॉलो नहीं कर रहे हो. So I think Subhash bhai, you have to throw some light on this. Definitely, Jitesh bhai, because as what you said, that the doctors are already into the race. Where and how the virtual CFO can help the doctors to providing those information. So your the first point is coming that your sales growth strategy should be the first is your digital marketing. How you can in today's world, the digital marketing is playing a very vital role, wherein it prevents the health packages during the festival and the holidays. Now you will say how it is possible in the festival and the holidays. During the time of the festival, basically, where the doctors can have that kind of the market range, where the peoples are into the festival mood, wherein they want to test their health, they want to go for the test, they want to diagnose their health. By that way, in those holidays period, where the marketing team, if they play a very vital role, if they put a proper strategies, proper the packages during those period, your sales can definitely grow very drastically. Now the next is on social media and the Google ads. In today's world, the social media, Facebook, Twitter, WhatsApp, there are various platforms are available where you can put your products, and those products can be sellable. You can make an awareness about the hospitals, how these treatments and how the hospital is the treating the patient in the best way, and what kind of the packages are available. So in social media and the Google ads, where you can generate definitely
a lot of good range. You can suggest the doctors where he can put all these ads, these in the social media. Then the doctor branding and the video marketing. Now it is a very important for Very every important. hospital technically, Correct. where the doctor, he should be presenting his own product, because he has a very depth knowledge of his own product. He can prepare his videos, he can put it those onto your YouTubes. There are various platforms are available where he can make the general awareness to the people what kind of the right treatment is available. So these all are the modes where the doctor can definitely use these platforms. I would add over here, Yeah, because Jitesh bhai. if you also want to do any kind of thing, you want to check for diabetes or anything. So what we do first, we check Google and these kinds of things. Absolutely. So you can expand your thing for 5 to 10 kilometers nearby areas. This Google Ads also, and that will help you to grow your business. So I think geo target is also 5 to 10 kilometers will be very preferable, because that nearest area would give you more kind of businesses. Absolutely, Jitesh bhai. And as what you rightly said, that Jitesh bhai, you know that you may mention that there should be an online reviews. You know, normally, and now it happens that that without reviews, now the coming generation, it is very important for them. What is the review is been going on to the market about my hospital? So, Hospital, correct. ji, so if you give the services, and if the review, let the review to be the bad and the good, So and if Subhash, the I review, think I would add over here one point also. So people, what hospitals, promoters, and this doing with the help of CFO and all. yeah, So we generally see the what kind of reviews are people are giving. If there's any revenues, negative reviews and all thing, yeah, then we could give some action related point over also to reply on that, and that will also help, because nowadays reviews and their replies are very important absolutely. for getting the branding of hospitals and these for Yes, these things. yes. Yes. Absolutely, Jitesh bhai, and we should take it in a very positive way. If the Positive way. hospital puts, even though if any patient, if they put any kind of the negative remarks, the hospital can definitely can give the better explanation for that. So there's a Correct. misunderstanding is been avoided, and that is, maintaining the reputation of the hospital also. Okay? Even if there is a review which is on a negative side, and the doctor has given his oversight to the negative reviews, so that can definitely due to the your reputation of the management. Second part comes where what is the patient experience and the And operations. Basically, this is very important for any hospital. If he wants to really grow, he should take the patient's review, his patient's experience feedback form, and let that feedback form has to be reviewed by the higher management, and they can improve, by which definitely there is a possibility chances of 3 to 4% increase in the revenue, where the doctor also comes to know where the point, which all are the area where he needs to put really a concentration and attention to improve that services. We can definitely see in every hospital, wherever there is a sales team, there is an KPIs tracking is there. The CFO has to definitely needs to keep looking what are the KPIs, and what are the the status of those KPI which has been given to the employee. Now that KPI may be the KPI, and there are the various measures, what you can say. What is the revenue per bed? What is your CAC? What is the claim denial rate? Because in insurance world now you see many of the hospitals has appointed various agencies, and those agencies technically what we have seen in the practical this thing, while giving them the status of the outstanding, the status of the collection from the insurance company, which doesn't goes proper feedbacks to the higher management. What is the partial settlement which doesn't reflect in the statements? So where the virtual CFO plays a very vital role, he updates the management. What are the rates of their claim denial? They can take on corrective measures to increase their revenue. They can, the reports are various systems are available in the hospitals, wherein the patients can we can have a review of the patient, how many times, what times he is waiting into the hospitals, his waiting time, which
Definitely in one of the hospital, we have a very good experience. The doctor has, the CFO services has given those kind of the reports to the doctor, wherein the doctor, when he has reviewed those within his management, he has taken a very corrective measures for that. And because of that, the footfall started increasing, because every patient is taking that, by care is being taken over there. There is a maker and checker system. Technically, if you see, the maker and checker system, where we can check what is the my billing system, is those billings is correct or not. We can avoid the by this maker and checker system, we can allow any kind of the missed item which has been not included in the bill. We can have those kind of like an implant, any procedural, and something has been missed out, which maker and checker system can definitely can increase the revenue. Yeah, Jitibhai. Then there should be, in many of the hospitals, what we have seen, there is there is no control where anybody can give the flat discounts to the patients. Okay, so the CFO services basically here can definitely play a very vital role, can put some kind of the authorization matrix where the discount mechanism can be approved by the the hierarchies basis. Because here we have to give some example, because in one of the hospital is given to management, we are giving 50,000 discount and doctor is approved the same, but later on they have given 60,000 and 10,000 was revenue leakage. So second part, the approval and then checker is not there. So that is also main thing where we have to implement the control points for this revenue leakages also, and that will have to revenue leakages and increase your sales. Definitely, Jidebhai, and the hierarchical system, if it has been implemented on the any kind of approvals, so it leads a very good reduce the discount. I mean to the revenue leakages. You should have like an NABS certification. Many of the hospital now, you must be knowing, in case of the your government hospital, wherever the government tie-up is there, if the NABH is not been implemented, those hospitals are not going to get any kind of the queries from the government portal. So it's very important that the the CFO needs to make understand to the management of the hospital, okay, that every hospital should be at least an entry level NABH we can recommend to the doctor. Then various EMI facility, when let's say suppose, for example, if I give you that key, wherein any of the patient, the hospital is not empaneled with one or two insurance company. So if the patient comes to the hospital, should we allow him to leave the hospital? No. The answer is a no. Because we should know there are the various facilities available in the market, like a G money concept, wherein these authorities, even if you are not tied up with any kind of an insurance company, these agencies reimburse you the medical claim. So all these facilities are available. I think so. If we take we'll take a lot of time for increasing. So these are the the things which is available into the marketing, in the market for your sales revenue. Now there should be a strategic partnership. In the strategic partnership, with whom you have we must see that is my hospital is empaneled with a CGHS, like ESI, we can say MJPJY, PMGAY, and many on that, like an MTKY. There are various government authorities available, wherein those are providing the footfalls to my hospital. And it's a very profitable venture, where if we make aware to the doctors, these all are the areas are there where we can capture and nurture and can take to the hospital or increase our revenue. We must see that my hospital should be properly empaneled with the GIPSA. Now we can also keep on updating to the doctor from the GIPSA. Now it is going to the GCI. Okay, so these kind of the tie-up should be there within every hospital. They should be the cashless basically. Then there's a corporate tie-ups are available. Society medical camps we can arrange. Now the corporate tie-ups, we can have one entire lecture on this particular topic. Yes. Yeah, and there are the means. You cannot enter into any of the corporates simply without having certain certification, without having certain documentation into the place.
So, and Jitesh Bhai, he is having a very good hands up on that, wherein I'll give you a practical example of the two hospitals where, we insisted to the management, and now today near about 5 to 10 crores of the revenue is coming out from this corporate tie-up. Okay, Correct, correct. these are the means are available. Then your networking system is already there. Your GPs are there. The businesses which is coming is no need to explain much more about that. And the CM funds are there. Now, our Chief Minister Fund, who is really making a help to the needy people wherever they are in need of any kind of your your operation, your surgery, or your anything where the patient doesn't have the money. We can upgrade, we can we can capture those kind of the sales, and we can definitely inform to the management that we can approach to the CM fund, we can apply for the CM fund. There are the trust support funding portals are available. Those grievances are available, wherein basically we can approach to those people, and we cannot let give any kind of the single sales out of the hospital. So these are the basically the major Jitesh Bhai what I feels about that. We can definitely the CFO, if he briefs to the management, if he guides to the management, so he can also diagnose the way the doctor is diagnosing the hospitals. Sure, sir. So I think everyone was have seen the what is the sales growth strategies, and these are very main strategies which hospitals do. But with the help of virtual CFO, we can give them proper guidance how we can implement this, and we can have the better sales positions in the market. And I think the second pillar which we need to talk about is basically smart cost control techniques. So here we can say these are the four smart control techniques. The first one is operational efficiency, second is financial control, third is claim revenue leakages, and fourth is strategic cost decisions. So in operational efficiency, so what we can say in operational efficiency is basically what management needs. Management needs basically कि भाई मेरा कॉस्ट क्या जा रहा है, तो डेली कॉस्ट ट्रैकर शीट शुड बी देयर, सो दैट कैन हेल्प द मैनेजमेंट कि भाई हाँ मेरा कॉस्ट ये जा रहा है मंथली डेली, सो दैट देयर शुड बी अ कॉस्ट ट्रैकर शीट. एंड सेकंड इज एक्सपेंस टू सेल्स रेशियो. सो हियर आई वांट टू एक्सप्लेन यू ऑल दैट कि भाई कोई भी हॉस्पिटल जो हो तो उसमें बेसिकली होता है क्या है कि भाई मेरे जो एक्सपेंसेस है वो रेवेन्यू के क्या प्रोपोर्शनेट पे है वो हमें पता होना चाहिए. तो जनरली क्या होता है कि वर्चुअल सीएफओ को मार्केट पता होता है कि भाई हाँ क्या चल रहा है, कि मेरा सैलरी जो है 15% होना चाहिए, मेरी डॉक्टर्स फीस का परसेंटेज क्या होना चाहिए, मेरे रेफरेंस का क्या होना चाहिए. तो जो भी एक्सपेंसेस है वो मुझे पता होने चाहिए कि क्या रेशियोस मेरे प्रोपोर्शनेट के होने चाहिए. इफ दैट इज एक्सीडिंग, लेट्स से अगर मेरा सैलरी 15% होता है और अगर वो 25% है to my revenue, that means कि you are doing something wrong. And I am talking about this for the जो hospital already stable है, हो सकता है initial stage पे salary cost ज़्यादा होगा. So where this can be reduced or where this can be properly monetized, so that can be help for the operational thing. और सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे भी है ऑपरेशनल चीज में कि भाई डिपार्टमेंट कॉस्ट अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए. आई थिंक जो भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होते, तो डिपार्टमेंट को भी अवेयर होना चाहिए कि हाँ अगर उनके ऊपर खर्चा हो रहा है और उनकी अकाउंटेबिलिटी उनको देनी चाहिए. तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि डिपार्टमेंटल मीटिंग्स वगैरह ऑर्गेनाइज करके प्रॉपरली हम वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि वो क्या वैल्यू एडिशन दे रहे हैं, और उनके रेगुलर मीटिंग से भी वो एक हेल्प होती है कि भाई हाँ कहाँ पे हम कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं, बिकॉज दे आर एक्सपर्ट इन देयर फील्ड. अगर आपके पास कोई पैथोलॉजी हेड है तो पैथोलॉजी हेड के पास अगर मीटिंग्स करके हम उससे डिस्कस करना पड़ेगा कि हाँ कोई एसेट है जो मैं अगर रेंट पे ले रहा हूँ और वहाँ पे वो पैथोलॉजी में यूज हो रहा है या कहीं पे भी यूज हो रहा है, तो वो मैं कैसे वहाँ पे उसको अगर रेंट आउट करूँ या फिर मैं लूँ, तो वो कैसे मैं कॉस्ट सेविंग वहाँ पे कर सकता हूँ. एंड द फाइनेंशियल कंट्रोल इज बेसिकली होता है कि अगर समझो वेंडर निगोशिएशन, अभी होता क्या है कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स में अगर कोई भी बिल्स आ रहे हैं तो वो बिल्स पे जो रेट्स लग रहे हैं, कैंटीन के रेट लग रहे हैं या पैथोलॉजी के रेट लग रहे हैं, तो वो क्या मार्केट में बाकी हॉस्पिटल्स को जो लग रहे हैं उस हिसाब से लग रहे हैं या फिर हो सकता है मुझे ज्यादा लग रहे हैं. तो यहाँ पे भी वर्चुअल सीएफओ एक मेजर रोल प्ले करता है कि भी जो आपके रेट्स है तो वहाँ पे वो निगोशिएशन कहाँ पे हम कर सकते हैं जो हमें बेटर रेट मिले मार्केट्स में. एंड देन जीएसटी रिकन्सिलिएशन होता क्या है कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स होते हैं जो जीएसटी में रजिस्टर्स होते हैं, बट उनके जो जीएसटी के बिल्स है इवन दो दे आर एग्जाम, बट जो भी क्रेडिट्स के बिल होते हैं तो वो चेक ही नहीं होते. तो वो भी एक चेक करके ये ऑर्गेनाइज एक चेक कर सकते हैं कि भाई वो सामने वाले ने मुझे क्रेडिट पास ऑन किया इवन तो आई एम नॉट टेकिंग दैट क्रेडिट,
बट मैं वो चेक कर सकता हूँ अगर क्रेडिट पास ऑन नहीं हो रहा है और मुझसे जीएसटी कलेक्ट कर रहा है, तो वहाँ केस में भी मैं वो जीएसटी पेमेंट होल्ड कर सकता हूँ वेंडर्स के, और जो भी है मैं उससे नेगोशिएट कर सकता हूँ कि भाई अगर, और मैं वेंडर भी चेंज कर सकता हूँ क्योंकि अगर वो नॉन कंप्लायंस कर रहा है तो मेरे लिए खराब है। एंड थर्ड इज क्रेडिट रेटिंग इंप्रूवमेंट। बेसिकली क्या होता है कि हॉस्पिटल्स में जो लोन्स होते हैं, तो लोन्स पे अगर इंटरेस्ट लग रहा है तो हम बोरोइंग कॉस्ट कम कर सकते हैं बाय द वे हेल्प ऑफ क्रेडिट रेटिंग्स। तो क्रेडिट रेटिंग्स अगर हमारे पास जैसे AAA+ है या AA+ है या जो भी क्रेडिट रेटिंग्स मैंने ले रखी है, तो दैट विल हेल्प टू दिस रिड्यूस योर बोरोइंग कॉस्ट। And third is claim revenue leakages. So I think Subhash bhai already informed this thing कि हमें हॉस्पिटल्स में ये चेक करना चाहिए कि भाई उनके जो क्लेम सेटलमेंट जो है, वो क्लेम सेटलमेंट जो जा रहे हैं वो पार्शियल सेटलमेंट हो रहे हैं या क्लेम सेटलमेंट जो हो रहे हैं प्रॉपर नहीं हो रहे हैं। होता क्या है कि कोई हॉस्पिटल अगर कर रही है तो वो केस में क्या करते हैं कि भाई उनके जो बिल्स बन रहे हैं वो आगे के बारे में सोचते हैं, पीछे का भूल जाते हैं। तो पीछे क्या हुआ है उनका, वो चीज वर्चुअल सीएफओ हेल्प करता है प्रॉपर रिपोर्ट्स देके कि भी हाँ आपके ये पार्सल सेटलमेंट में गए हैं या आपके क्लेम सेटलमेंट प्रॉपर नहीं हुए हैं या फिर आपका ये क्लेम रिजेक्शन हो रहे हैं, और उसके जो रिमार्क्स है वो रिमार्क्स का प्रॉपर उसके ऊपर सॉल्विंग, यानी वो जो डायग्नोस उसके ऊपर जो करना होता है उसको चेक करके उसको सॉल्व करना होता है। तो वर्चुअल सीएफओ वहाँ पे हेल्प करता है टू गिव दैट रिपोर्ट टू मैनेजमेंट। So fourth is strategic cost decision. So strategic cost decision is basically जैसे मैंने बताया कि अगर मुझे रेंट पे लेना है एसेट या बाइंग करना है, तो वहाँ पे भी वर्चुअल सीएफओ हेल्प करता है कि भाई टू प्रोवाइड दैट रिपोर्ट की भी हमें क्या करना चाहिए। फिर यहाँ पे एक होता है कि भाई हॉस्पिटल्स, मेनी हॉस्पिटल डज बंडलिंग सर्विसेज ऑल्सो। सो बेसिकली क्या होता है कि अगर मैं बंडलिंग सर्विसेज, सुभाष भाई आई थिंक ये भी एक दिन का सेशन है अगर हम उस पर डिस्कस करें तो बंडलिंग, सुभाष भाई यू आर ऑन म्यूट। It is as what you said, it is a very, very important role plays in the entire hospital. Yeah, as what you was rightly saying that, how we can say the capital interest and, if the hospital doesn't have the proper sufficient fund, so through the bundling system, how does they Correct, can, correct. take the capital asset in the company and all those kind of things. What you says is. So basically what bundling system is, I just want to give some brief over here कि भाई बंडलिंग में क्या होता है कि कोई भी एसेट हम जो ले रहे हैं, तो हो सकता है मेरा कैपिटल आउटफ्लो अभी ज्यादा जा रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ उसको बंडलिंग करके जो मेरे कंज्यूमेबल्स है, अगर वही मैं मटेरियल्स में कंज्यूमेबल लूँ तो कंज्यूमेबल्स लेके मैं वहाँ पे वो कॉस्ट में पे करके बाय वे ऑफ कंज्यूमेबल आई कैन बंडल दैट एसेट टू माई दिस थिंग इन माई बिजनेस। तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि मुझे कैपिटल आउटफ्लो तुरंत नहीं होगा, बट दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ काइंड ऑफ ईएमआई फ्रॉम द वे ऑफ कंज्यूमेबल्स। So in that case you will get the bill, and that bill asset का जो bill होगा वो मुझे depreciation claim करने में help करेगा, मेरा EBITDA भी अच्छा होगा वो केस में। Yes. So I think this is the very very big point over here Very, for very the big and the very, very win-win point situation wherein, it's win-win point correct. from the doctor's point of view, from the hospital point of view. It's increasing your EBITDA, you are claiming the depreciation. So all are absolutely in a very fantastic way. It works basically. I think my laptop got switched off, sorry. आवाज नहीं आ रहा था मेरे को बोलने को। Nitish भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है। So am I audible? या हाँ, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि यही है जो कॉस्ट टेक्निक्स में हेल्प करते हैं। और यहाँ पे हम एक चेक कर सकते हैं जो कंसल्टेंट प्रोडक्टिविटी भी हम चेक कर सकते हैं बाय वे ऑफ दिस कंसल्टेंट प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट। तो वहाँ पे हमें ये चेक कर सकते हैं कि भाई जो कंसल्टेंट मुझे रेवेन्यू दे रहा है, जो भी मेरे यहाँ पे सर्विस कर रहा है, तो वो क्या मुझे रेवेन्यू दे रहा है, और उसके वहाँ पे मैं कैसे कॉस्ट, अगर मैं उसको ज्यादा दे रहा हूँ बाय वे ऑफ नेगोशिएशन एंड बाय ट्रैकिंग द थिंग्स, वी कैन हैव दैट बेटर कॉस्टिंग रिडक्शन ओवर हियर। Absolutely. So I think third pillar is MIS and reporting system. So MIS and reporting system, I think Subhas bhai, you can throw some light on the same. Yeah, sure. As what Jinesh bhai, you have said that, that the MIS and the reporting, which is a backbone of any of the hospital, I can say, with my experience.
which gives you the true and the fair information about the hospital, where the hospital is standing about that. So as you have shown that the MIS, there is a three types of the MIS. One is a monthly MIS, which needs to be given to the hospital. One is a strategic MIS, and third is the daily MIS. So technically, the hospital, if any of the doctor on his table, if he gets his daily reports on his fingertips with some kind of the formalization, which give him the operational matrix, which give him the strategy, what he needs to do. So any doctor, he will be very happy if he keeps on getting what is my daily OPD sale, what is my daily IPD sale, how much surgeries we have done, what is my revenue flow is being going on, and what is my total collection which is coming, what is my total payout. If these kind of the daily MIS we gives to the hospital, the doctors definitely is today, if you say, ask me, in any of the most of the hospital, what we have seen where the doctor is in the dark, he doesn't know that what is my total revenue at the end of the month or end of the year. Everyone is struggling, and then they comes with some kind of the facts and figure. But if we keeps giving the daily MISs to the hospital, daily revenue reports to the hospital, the doctor, he can decide for his future coming. So we have a monthly MISs wherein every month, what is my total sales? What is the performance of my hospital? And that sales also, if you can bifurcate, what is my OPD? What is my IPD? What are my procedural sales is happening? What are my, the footfall which is coming into my hospital? What is my conversion ratios to the hospital? And your monthly payouts, your monthly cost of goods sales. What is your gross profit to the hospital? What are your direct expenses? What are your indirect expenses? And what is some time back, Jitesh Bhai was saying that if any doctors, if he keeps on getting, what is my top line revenue? What is my cost of those, the revenues? My cost is appearing in my PNL. What is my staff cost? Is the ratio is going out or in? What is my establishment cost? Is my establishment cost is increasing some kind of drastical if I am taking some shops on a rent and something like, if they are equipped into my revenue. So these kind of MISs help the doctors, every doctors, to keep a strategic planning basically. And with those strategic planning, they can make their future planning. They can focus the top line. Where are we and where should we reach? So they can definitely can think how they can increase their footfall. If those for increasing their footfall, should they need to move to some new premises because the volumes are increasing? It is not equipped into the same hospital, and we have seen all these practical things. If the doctors keeps on getting these kind of MISs, this kind of the analysis on his table on the weekly basis, on the daily basis, and on monthly basis, definitely the hospital, there is no two thought they can increase their revenue by any kind of, by I think सुबह भाई, if as per our experience, I think बहुत सारे hospitals में यही problem आ रही है कि उनको daily MIS, monthly MIS, absolutely, जो this is MIS what है the वही pain नहीं area. है। जितेश भाई, बहुत बड़ा पेन एरिया है। बहुत, it's very big pain area for the hospitals, क्योंकि क्या होता है कि अगर उनको पता ही नहीं चल रहा है मेरा डेली फ्लो क्या चल रहा है, मेरा मंथली प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, मेरा मंथली कैश फ्लो क्या है। एग्जैक्टली जितेश भाई। और जितेश भाई जैसे ना कि ये बहुत अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, और इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इफ द डॉक्टर्स गेट्स दिस इंफॉर्मेशन, नो, I mean, they can make a drastic changes in their revenue portfolio, sir. So we help the hospital, I think with the this last 10 plus years of experience, we help the hospitals कि भाई जहाँ पे उनको जो required reports होती है, जो daily मुझे MI चाहिए, daily और monthly MI चाहिए, और जो भी मुझे projection चाहिए. So in one of the hospital, I think we help them to plan for the this robotic purchase as well. So we have already, we have already our vision to equip that asset, and that was already there in our plan and projections. So that really helps management these three main reports: daily, monthly, and these projections reports. Definitely, Jitesh bhai, correct. And Jitesh bhai, we have seen in the single specialty hospital, when if the single specialty hospital, like for example, I'm just giving an eye care hospital ka example. If you have like you're operating with a cataract, you're operating with a retina, you're operating with a glaucoma. So by generating an average cost per person,
what is coming. So the doctor, he can make a lot of, I mean, the Yes, yes, yes. Where yes, he can know where our profit, where our average price is reducing, where our average price is, absolutely. What yeah, corrective measure he needs to take, basically, correct, correct. correct, Jitesh? Yeah, yeah. So this was the third main pillars, MIS, and I think fourth will be very interesting from the CA point of view also. I think more बहुत सारे CAs भी join हुए हैं, doctors भी join हुए हैं, healthcare employees भी CA employees भी join हुए हैं. So this is the main four pillar, which is says tax optimizations, GST and structural planning, and legal and regulatory compliances. So आई थिंक ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टैक्स प्लानिंग और कंप्लायंस वाला पोर्शन फोर पिलर भी है, क्योंकि ये हॉस्पिटल को इतनी हेल्प करता है कि जहाँ पे उनके कॉस्ट बोलो, रेवेन्यू बोलो, बहुत ड्रेस्टिकली चेंज हो सकते हैं अगर दे विल प्लान प्रॉपरली. Absolutely, Jitesh. Yeah. So in cost tax optimization, if I say generally, तो बहुत सारे revenues, बहुत सारे points है जहाँ पे हम tax optimize कर सकते हैं hospitals के लिए. So I think section 35 AD, एक one of the section is 35 AD, which help the hospital for the 100% purchase का जो भी एसेट होता है इन न्यू हॉस्पिटल्स और एक्सपांशन के स्टेज पे 100 बेडेड हॉस्पिटल्स के केस में, अगर वो न्यू हॉस्पिटल्स अगर ले रहे हैं और अगर एक्सपांड करना चाहते हैं, तो अगर कोई एसेट वो लेते हैं तो उनको 100% एग्जेम्पशन मिलता है उसका. So this is will be in the expansion also. This really helps to And claim Jitesh, that 100% expense. and Jitesh, these things are many of the doctors are unaware about that. Unaware of, yeah, yeah, sure, Yeah, sure, so our virtual CFOs, they can make these kind of things aware to the doctor, and which correct. helps to the hospital to grow further. And secondly, I think 80 double J double A. So जहाँ पे भी सिंगल स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हो, जहाँ पे वो ब्रांचेस ज्यादा हो, तो वहाँ पे भी 80 डबल जे डबल ए का बेनिफिट ले सकते हैं बाय वे ऑफ क्लेमिंग एडिशनल एक्सपेंसेस ऑन एम्प्लॉय कॉस्ट. Right. एंड सेक्शन 37, यहाँ पे बहुत सारे हॉस्पिटल्स को प्रॉब्लम्स होती है. क्या होता है कि जैसे भी डॉक्टर कॉस्ट हो या बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो हॉस्पिटल रिलेटेड होते हैं, बट होता क्या है कि उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता. अगर आप देखोगे तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स है तो डॉक्टर्स को पेमेंट कर रहे हैं वगैरह कर रहे हैं, बट उनके पास ना उनके अग्रीमेंट्स है, ना उनके पास उनके जो प्राइसिंग उनके डिस्कस करे हुए हैं. तो वो उनको यहाँ पे भी प्रॉब्लम करते हैं लिटिगेशन में भी, और आगे जाके लीगली भी प्रॉब्लम करते हैं. तो इनकम टैक्स के लिए भी प्रॉब्लम है और लीगल के लिए भी प्रॉब्लम है. कल उठ के अगर उनको कोई डॉक्टर अगर सू करता है कि नहीं भाई मेरा ये प्राइसिंग डिस्कस नहीं हुआ था या ये जो भी है, तो हम एडवाइस करते हैं कि हॉस्पिटल्स के जनरली अग्रीमेंट्स या जो भी उनके एक काइंड ऑफ एमओयू शुड बी देयर, and that will help for 30 sections section 37 claiming expenses also, and by way of legal also. Right. And section 17 to 1, I think Subhash bhai you are already informed this thing. Yeah. जहाँ पे हमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ टाइप्स करने होते हैं वहाँ पे हमें 72 का सर्टिफिकेट लेना होता है. दिस विल Correct. हेल्प टू यू ग्रो योर सेल्स एंड मार्केट फुटफॉल एंड ऑल. एंड होता क्या है कि मैंने बहुत सारे हॉस्पिटल्स में देखा है, कभी कभी क्या होता है कि लाइफ सेविंग इक्विपमेंट जो होते हैं वहां पे हम 40% डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं. तो मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स आर नॉट अवेयर ऑफ, एंड सीएस आर आल्सो नॉट अवेयर ऑफ, जहाँ पे उनको ये ध्यान ही नहीं होता है कि मुझे लाइफ सेविंग पे 40% डेप्रिसिएशन क्लेम करना है. Correct. तो Right. होता क्या है कि वहाँ पे मैं 15% डेप्रिसिएशन क्लेम करता हूँ, तो विच इज ऑल्सो वन ऑफ द हेल्पफुल फॉर द टैक्स ऑप्टिमाइजेशन. और वन ऑफ द वन मेन टूल ऑल्सो इज देयर. होता क्या है कि इनिशियल स्टेज पे जब हॉस्पिटल्स होती है तो वहाँ पे उनके लॉसेस होते हैं. अगर वो इनके लॉसेस है तो वो केस में लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट उनके लिए बहुत प्ले करता है रोल दिस cash flow. So in one of the hospital we help very well to grow their this cash flow thing. एंड टीडीएस रिकंसिलेशन एंड रिसीवेबल. सो हमने देखा है कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स के जो सीएस होते हैं या जो भी अकाउंटेंट्स होते हैं, तो उनके वहाँ पे क्या होता है कि जो हॉस्पिटल्स की अकाउंटिंग एंट्रीज होती है तो वो अकाउंटिंग एंट्रीज वो वे में नहीं होती जिस वे में चाहिए. तो विद द अवर एक्सपीरियंस दे कैन हेल्प इन टीडीएस रिसीवेबल के जो भी इंश्योरेंस के जो भी टीडीएस रिसीवेबल्स होते हैं उनके रिकंसिलेशन प्रॉपर हो, और वहाँ पे उनका जो भी लॉस हो रहा है. तो इन वन ऑफ द हॉस्पिटल देयर वाज अ लॉस ऑफ समवेयर अराउंड 10 to 15 लाख वाज देयर, जहाँ पे वो हर ईयर सेल्स में एडजस्ट कर देते थे. तो वो भी एक टीडीएस रिसीवेबल में हेल्प करता है रिकंसिलेशन बाय वे ऑफ टैक्स ऑप्टिमाइजेशन. Absolutely. एंड जीएसटी एंड अदर स्ट्रक्चर प्लानिंग फॉर इनकम टैक्स. दिस इज द मेन थिंग. अगर आप कोई भी हॉस्पिटल्स में जा रहे हो या फिर हम कोई भी हॉस्पिटल्स देख रहे हैं तो हमें देखना चाहिए कि उनका स्ट्रक्चर कैसा है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर होता है उसी पे ह्यूज टैक्स सेविंग्स हो सकती है, जहाँ पे मैनेजमेंट को पता ही नहीं होता कि भाई हाँ मैं ये स्ट्रक्चर अगर प्रॉपर फॉलो करूँ तो वहाँ पे मुझे जीएसटी में इतना टैक्स पैसे बढ़ सकता है. तो इन वन ऑफ द हॉस्पिटल विद आवर एक्सपीरियंस वी सेव 2 to 3% इन जीएसटी ऑफ टॉप लाइन. आई थिंक दिस विल बी वेरी बिग अमाउंट फॉर द हॉस्पिटल.
Absolutely. So earlier it was 12% GST and now it's 5%. So it will be very big amount for 2 to 3% to save GST for hospitals. Correct. And proper GST filings. So here I want to give some tips to the all the accountants and all the practitioners कि भाई जीएसटी के जो फाइलिंग्स होते हैं हॉस्पिटल्स के हमने देखे कि वो भी बहुत रॉन्ग होते हैं। तो जीएसटी के फाइलिंग्स जो हॉस्पिटल के होते हैं उसके अंदर हमें ये ध्यान रखना होता है कि भाई इवन दो इट इज एग्जाम्ड, आई थिंक मुझे पता है बहुत लोगों को ये होगा अरे सर जीएसटी तो एग्जाम्ड है, बट ये हमें देखना होता है कि हॉस्पिटल में जीएसटी एग्जाम्ड हर बार नहीं होता। बहुत बार ऐसा भी होता है जहाँ पे हमें जीएसटी नंबर्स लेने होते हैं, जहाँ पे Correct. मेरी रेंट इनकम हो, स्पॉन्सरशिप इनकम हो। आई थिंक 25 से ही लास्ट ईयर हमें स्पॉन्सरशिप इनकम पे भी जीएसटी आ गया है। अगर कोई Correct. हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड है और वहाँ पे अगर उनको B2B सर्विस जो दे रहे स्पॉन्सरशिप की और स्पॉन्सरशिप ले रहे तो वहाँ पे जीएसटी पे करने आ रहा फॉरवर्ड चार्ज में। तो ये प्रॉब्लम क्या होती है जब वहाँ पे उसके ऑडिट होते हैं या सर्वे होते हैं या जब भी होते हैं कुछ भी, तब ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं हॉस्पिटल्स को कि आपने नंबर क्यों नहीं लिया। बहुत सारे हॉस्पिटल भूल जाते हैं कि भाई मुझे इनवॉइसिंग भी करना है क्योंकि उनको ऐसा लगता है अभी मैं एग्जाम हूँ, नंबर लिया हुआ है, टर्नओवर मेरा 5 करोड़ के ऊपर है, मैं B2B रेंट की सर्विस दे रहा हूँ तो इनवॉइसिंग करना है। Right. तो दिस इज ऑल्सो थिंग विच मिस्टेक्स जनरली पीपल डूज। फिर होता क्या है कि भाई ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो जीएसटी के अंदर हमें ध्यान रखनी है। ये तो हमने खाली अभी 3-4 मेन पॉइंट हाईलाइट किए, ऐसे और भी Absolutely. पॉइंट है जो हमें जीएसटी फाइलिंग पे ध्यान देनी चाहिए हॉस्पिटल के केस में। फिर होता क्या है कि हॉस्पिटल के केस में लोग एग्जाम सप्लाई भी डालना भूल जाते हैं सुभाष भाई। जी, सही बात है। तो वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। वो होता क्या है हॉस्पिटल सप्लाई नहीं डाल रहा है फिर ऑडिट फाइल नहीं कर रहा है, ऐसे भी करेक्ट। प्रॉब्लम है। जी, 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 जी। एंड और इनकम टैक्स प्लानिंग भी स्ट्रक्चर में कर सकते हैं जहाँ पे बहुत सारा इनकम टैक्स भी हॉस्पिटल का बच सकता है। आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये जो टॉपिक्स है वो जी, टॉपिक्स ऑल टुगेदर ऐसे टॉपिक्स है कि अगर हम उस पे एक एक टॉपिक पे डिस्कस करें तो एक एक घंटे का absolutely, सेमिनार हो सकता है। definitely, Jitish bhai. सो And there is a lot of savings is the expected the so way. people are doing this trust planning also in hospitals where they can have 100% tax planning, 100% tax saving in hospitals. जी, 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 जी। सो वन ऑफ द मेजर एग्जांपल लीलावती देख लो, बाकी देख लो, जो भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स करेक्ट, है करेक्ट, तो वो करेक्ट, ट्रस्ट के थ्रू फॉलो कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ प्राइवेट लिमिटेड। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। एंड आई थिंक थर्ड पॉइंट इज आफ्टर दिस इज लीगल। सो लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लाइंस क्या होना चाहिए कि हमारे सारे कंप्लाइंसेस टाइम पे होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हॉस्पिटल इनिशियल स्टेज पे टैक्स पेमेंट लेट करता है या फिर टैक्स पेमेंट करता ही नहीं है, डिले करता है, तो बहुत सारे लोगों को पेनल्टीज प्रोसिक्यूशन सफर करना पड़ता है, फिर आपसे कंप्लाइंसेस नहीं करते हैं। तो ये चीजें जो होती है वो हॉस्पिटल को हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि भी उनके टैक्स प्लानिंग जो होते हैं, टैक्स कंप्लाइंसेस जो होते हैं वो प्रॉपरली होने चाहिए। Absolutely. और आई थिंक सुभाष भाई लीगल Dipesh इज वेरी वीक Very, इन yeah, हॉस्पिटल। yeah, yeah, yeah. That is what we have seen, that the legal aspect, यस यस यस। it should be very strong. लेबर लॉ है हो गया, हम उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, मिनिमम वेज एक्ट फॉलो कर रहे हैं। अब क्या होता है कि बहुत सारे से जो हॉस्पिटल ओनर्स होते हैं उन्हें पता नहीं होता है कि वहाँ पे स्किल्ड और अनस्किल्ड एम्प्लॉइज भी होते हैं, उनकी मिनिमम मिनिमम वेज वेज एक एक्ट फॉलो करना होता है, भी है। एमएलडब्ल्यू फॉलो करना होता है, पीपीएससी फॉलो करना होता है। एब्सोल्युटली। और आई थिंक अभी तो ईएसआईसी भी आ गया है, इफ ऑल फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ हॉस्पिटल्स आर नाउ अप्रैल अवेयर। ऑनवर्ड से दैट इज आल्सो पहले एप्लीकेबल, या। हाँ नवंबर से वो भी आ गया जो पहले ईएसआईसी भी नहीं था। जी, जी। तो दैट इज आल्सो नीड टू बी फॉलोड। No, no, absolutely, Jitesh bhai. And the very important role is that where the virtual CFOs should update to the management. Now, यस यस following and not following दिस is absolutely on their wins, basically. Okay. यानी मेरा भी यही मानना है कि होता क्या जी, है कि हॉस्पिटल को लगता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब करूंगा, लेकिन जब वो बड़ा होगा तब उसके अगर 3 साल के बाद वो रिकॉर्ड तैयार नहीं है, अगर उनको कोई जी, फंडिंग्स लेनी है या कुछ भी करना है, तब वो पता चलता है कि भाई यार ये तो चीज मैंने absolutely, करी ही नहीं है जो कि मुझे पहले absolutely, से प्लान आउट करनी चाहिए थी। जहाँ पे वर्चुअल सीएफओ बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है absolutely, Jitesh हॉस्पिटल को गाइडेंस देने के लिए कि नहीं हमें ये करना चाहिए आगे से। ओवर जी, टाइम्स नहीं पे करते हैं, जी, मतलब उनको उनके इम्पैक्ट नहीं पता, बट वो जो इम्पैक्ट होते हैं वो ईबीटा में इस तरीके से एडजस्ट होते हैं कि बाद में जब फील होता है कि यार मेरा इतना वैल्यूएशन कम हो गया। correct, 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 Jitesh bhai. Absolutely. सो आई थिंक वी नीड टू ब्रीफ ऑन दिस। आई थिंक बहुत ज्यादा हो गया है, मुझे लग रहा है कि 4 जो पिलर्स हमने डिस्कस किए बेसिकली। सो आई लाइक टू समराइज ओवर हियर कि जो मेन 4 पिलर्स इन द हॉस्पिटल फॉर प्रॉफिटेबिलिटी एंड ऑल। द फर्स्ट वन वाज रिलेटेड टू सेल्स ग्रोथ स्ट्रेटेजी जो हमें करनी चाहिए। सेकेंड वाज सेल कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन कंट्रोल जो होना चाहिए हॉस्पिटल्स में। और थर्ड जो होता है एमआईज रिपोर्टिंग, क्योंकि ये अगर एमआईज रिपोर्टिंग नहीं हुई तो भाई हॉस्पिटल को पता ही नहीं चलेगा क्या चल रहा है। जो बहुत सारे डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स के केस में होता है कि उनको पता ही नहीं चलता कि मेरे केस में क्या चल रहा है, क्या करना है और मेरा विजन क्या है आगे का, तो वो पता ही नहीं रहता है। और टैक्स प्लानिंग जो एक होता है फोर्थ पिलर। सो दिस आर द मेन 4 पिलर्स व्हिच एवरी हॉस्पिटल नीड टू बी लुक आफ्टर एंड दिस कैन एंड फॉर दिस द वर्चुअल सीएफओ प्लेज वेरी गुड रोल हो हियर। सो आई थिंक मुझे अभी समझ में आ गया होगा आपको कि भाई वर्चुअल सीएफओ क्यों चाहिए हॉस्पिटल्स के लिए।
सो वर्चुअल सीएफओ खाली हॉस्पिटल्स के नंबर्स नहीं देखता, वो आपके बियॉन्ड ऑक्यूपेंसी। होता क्या है कि हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर्स होते हैं वो खाली ऑक्यूपेंसी पे ही ध्यान देते हैं, बट वी थिंक ऑलवेज फ्रॉम द बियॉन्ड ऑक्यूपेंसी थिंग। सो मुझे लग रहा है कि भी हॉस्पिटल्स को वर्चुअल सीएफओ की सर्विस लेनी चाहिए, और वो वर्चुअल सीएफओ की सर्विस से क्या फायदा होता है वो हम दे सकते हैं, जहाँ पे उनके सेल्स में बढ़ सकते हैं, कॉस्ट कम हो सकती है, टैक्स प्लानिंग अच्छी हो सकती है। तो हम जो सर्विस दे रहे हैं अभी एज ऑफ नाउ सुभाष भाई, तो आई थिंक हम जो सर्विस के लिए चार्ज कर रहे हैं, आई थिंक वी आर चार्जिंग पीनट्स काइंड ऑफ थिंग Absolutely. फॉर दिस प्रोवाइडिंग दिस काइंड ऑफ सर्विसेज टू हॉस्पिटल्स, Hey, जहाँ पे Jinesh bhai, हमने हॉस्पिटल में बहुत सारे टैक्स बचाए हैं, सेल्स में हेल्प करा है, ग्रो करने में विजन क्लियर करा है कि हमें क्या करना है आगे, मार्केटिंग के ऊपर हमने हेल्प करी है। तो दिस आर द absolutely, मेन Jinesh bhai, फोर पिलर्स। आपने जो बताया जितेश भाई, कि the way the doctors is diagnosing to the patient, the same way the virtual करेक्ट, CFO, he is diagnosing the each aspect of the hospital. As हॉस्पिटल, what you have said that very correctly, that there are the four pillars, how the करेक्ट करेक्ट। sales can be grow. The virtual CFO can, I think so, he can play a very vital आई role. थिंक बस भाई आई विल गुड गिव वन एग्जांपल कि अगर आप प्रॉपर्ली चेक करो तो कोई हॉस्पिटल में अगर बड़ा डॉक्टर हो जिसको 3 करोड़ का 4 करोड़ का रेवेन्यू है, तो वो हॉस्पिटल को 15 करोड़ का अगर रेवेन्यू दे रहा होगा, तो आप उसको बोल सकते हो कि एक हॉस्पिटल चालू कर लो। Absolutely. You know, सो if the doctors, they keeps on getting the proper report, what is my यस यस, receivable, what are the age of my receivables, भाई ये 365 and above क्या हो गए, क्यों हुए हैं, he can, हाँ हाँ, he can question five to the those employees in his hospital. He can, आज जैसे MSME है, अभी MSME में अगर हम उनको वो अपडेट नहीं रखें कि भैया एग्रीमेंट अगर नहीं करा है आपने, तो भाई 15 दिन के अंदर पे करना है, अदरवाइज यू आर गोइंग टू गेट द डिसअलाउंसेस में उतना हमको। हाँ, तो उनको यही लगता है सर 45 डेज में पे करना है। एग्जैक्टली exactly. और MISS के बारे में हमने जो डिस्कशन करा कि इफ द डॉक्टर्स कीप्स ऑन गेटिंग दोस काइंड ऑफ द वेरियस MISS, हमारे यस यस यस, डेफिनेटली द हॉस्पिटल, एनी हॉस्पिटल, मैंने हम जो एमआईएस अभी हॉस्पिटल्स को दे रहे हो उनको 10 दिन में ही पता चल जाता है कि भाई, या तो दूसरे दिन ही पता चल जाता है 5 से 10 दिन में कि ये महीने का एब्सोल्युटली मेरा सेल क्या होगा। करेक्ट 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 तो करेक्ट। वहां से उनको पता चल जाता है कि हाँ ये महीने का मेरा टॉप लाइन क्या होगा, उनको 2 तारीख को पता चल जाता है कि मेरा प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। और जितेश भाई क्या होता है ना, हर हॉस्पिटल की भी सीजनलिटी होती है। Now करेक्ट in करेक्ट certain months there is no business. I mean the business is there, but it is not equivalent to the other previous months. Basically, तो करेक्ट, डॉक्टर को भी तो कॉस्ट, एक फिक्स कॉस्ट है, वो फिक्स कॉस्ट चलाने के लिए he also needs to have some kind of strategies, no? So if, strategies, yes, targets and these plannings and vision। everything. So if the what I believe now, if the we keeps on giving the right information to the hospital, definitely the CFO can diagnosis to the hospital and he हॉस्पिटल can फाइनेंशियल lead the हेल्थ, hospital to the next stage. Jitesh bhai, this is what I mean, sir. yeah, same here। this way we are helping to hospital, I think, we can say। सो आई थिंक अब आई थिंक एवरीवन शुड अवेयर ऑफ कि भाई क्यों हमें सीएफओ चाहिए, क्या नहीं, उसकी क्या, सीएफओ क्या करता है वर्चुअल सीएफओ। सो आई थिंक वी शुड एंड ओवर हियर सुभाष भाई, क्योंकि अगर ये जो टॉपिक्स है वो खत्म ही नहीं हो गए। नहीं नहीं, और जितेश भाई जैसे हमने कहा ना, ये बहुत अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ऑर्गेनाइज सेक्टर और है, यस यस, इतनी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, बहुत इतनी अपॉर्चुनिटी है यहाँ अपॉर्चुनिटी पे, है। आई बिकॉज विल आई से थिंक एवरी हॉस्पिटल 9 to वांट्स टेक्निकली, कि he करेक्ट should have done virtual CFO. If we go वर्चुअल and we सीएफओ, speech and if we make them understand about these points, if he keeps on getting this kind of the rewards, the kind of the reports where the देखो यस यस। yeah. So I think we should end over here. So we can have the some question answers around, because meeting is done already. So thank you all of you for joining and giving क्वेश्चन था some। मुझे। हाँ बोलिए ना सर। हाँ सर, कैन आई आस्क माय क्वेश्चन? Sure यस sir. यस बोलिए। हाँ, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेटिव वेबिनार है, नॉलेजेबल। एज ए प्रैक्टिसिंग चार्ट अकाउंटेंट मेरे पास अभी तो कोई हॉस्पिटल नहीं था, बट बहुत सारी चीजें मुझे भी पता नहीं थी, लीगल पर्सपेक्टिव एंड अदर ऑपरेशनल पर्सपेक्टिव। तो आप दोनों ने बहुत बढ़िया उसके ऊपर हाइलाइट्स दी है। थैंक यू वेरी मच। मेरे 2-3 लीगल थैंक यू क्वेश्चंस सर। हैं, पूछ सकता हूँ? हाँ सर पहला पूछिए, ये जो अगर हम यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे जवाब दे पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो हम बाद में कॉल करके भी डिस्कस कर लेंगे। सिंपल क्वेश्चन है सर, इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरीवन। जनरली हॉस्पिटल का लीगल स्ट्रक्चर जो रहता है, प्राइवेट लिमिटेड, LLP, ट्रस्ट, ये कौन सा अच्छा स्ट्रक्चर है लीगल स्ट्रक्चर? जनरली महाराष्ट्र में क्या है, चैरिटेबल ट्रस्ट के अंडर वो फॉर्म होती है, यानी चैरिटेबल ट्रस्ट फॉर्म होता है, उसके अंदर हॉस्पिटल का इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है। तो क्या होता है कि उसका जो पैन नंबर है वो ट्रस्ट का पैन नंबर होता है, और बैलेंस शीट जो बनती है वो ट्रस्ट की बनती है, उसके अंदर
सारी एक्टिविटीज रहती है, स्कूल रहता है, कॉलेज रहता है, बाद में कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बन जाती है, तो ओवरऑल एक प्रॉपर रिव्यू नहीं मिल पाता। सेकंड थिंग, आपने क्रेडिट रेटिंग के बारे में पूछा था, अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है कि ट्रस्ट के अंडर ही हॉस्पिटल का एस्टेब्लिशमेंट हो चुका है, तो वहां पर क्रेडिट रेटिंग कैसे निकाली जा सकती है। एंड अगर हम फर्स्ट टाइम, अगर मैंने अभी तक 10 साल मेरा ओवरऑल प्रैक्टिस का 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है, मगर अगर मैं फर्स्ट टाइम किसी हॉस्पिटल के पास जाता हूँ ये वर्चुअल सीएफओ सर्विस पिच करने के लिए, तो वहां पर मुझे क्या चैलेंज आ सकते हैं या फिर मुझे कैसे जाना चाहिए, क्योंकि वो तो मुझे पूछेंगे कि इसके पहले आपने किस हॉस्पिटल के बारे में ये किया है, क्या काम किया है क्या नहीं है। बट हमको तो इन जनरल तो पता रहता है, बट स्पेसिफिक नहीं पता होता है, तो इसके ऊपर भी थोड़ा आप हाईलाइट देंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। सर जैसे मैंने आपको आई थिंक बताया है, मुझे लग रहा है कि आज जो हमने बताया है वो आपके लिए बहुत सारे एंट्री पॉइंट्स हो सकते हैं। अगर आप कहीं भी हॉस्पिटल में जा रहे हो तो चेक करके कि हाँ वो ये सब चीजें कर रहे कि नहीं कर रहे। तो आई थिंक हमारे जो आज के प्रेजेंटेशन है उसी से आपको पता चल जाएगा कि आपके हॉस्पिटल्स में क्या देखना चाहिए। तो दैट विल हेल्प यू फॉर द न्यू हॉस्पिटल्स। एंड सेकेंडली आई थिंक आपने जो बोला ट्रस्ट वाला कि मुझे ट्रस्ट करना चाहिए, एलएलपी करना चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड करना चाहिए, तो बेसिकली मैं ये बताऊंगा कि वो हॉस्पिटल्स के जो फाउंडर्स होते हैं या ट्रस्टीज होते हैं उनके ऊपर होता है कि उनका विजन क्या है। उनको अगर सोशल सर्विस देना है और उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे और वो उसमें दोनों वे है। अगर एज ए सीए मैं बोलूंगा कि भाई टैक्स प्लानिंग करनी है या क्या करना है, मेरा विजन क्या है, मुझे सोशल सर्विस देनी है, तो मैं बोलूंगा ट्रस्ट करो। अगर मेरा प्लानिंग है कि मुझे आगे जाके हॉस्पिटल को वो लेवल पे लेके जाना है लाइक जुपिटर एंड ऑल, कि मुझे करूँ कि उसको आईपीओ लाना है या कुछ भी करना है, तो वो केस में मुझे बोलूंगा मैं प्राइवेट लिमिटेड करो। तो दिस आर द थिंग्स तो दैट वी नीड टू सी फ्रॉम द प्रमोटर एंड दिस कि भाई हमें आगे जाके माइंडसेट मेरा क्या है, तो उस पर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना चाहिए। ओके, ऐसा कुछ है क्या पैरामीटर कि अगर आपको प्राइवेट लिमिटेड बनाना है तो डॉक्टर ही होना चाहिए उसका शेयर होल्डर, या मुझे फिर लग रहा है कि बाकी लोगों के भी बहुत सारे क्वेश्चंस है हमें, आई थिंक वी कैन डिस्कस पर्सनली आल्सो। ओके सॉरी ओके, नो सर इश्यू, बट थैंक यू वेरी मच। या थैंक यू। जितेश भाई, मेरा एक क्वेश्चन है, पूछूं? हाँ हाँ बोलिए बोलिए, अमन भाई बोलिए। क्वेश्चन ये है कि मेरा एक हॉस्पिटल क्लाइंट है, तो उनका जो हॉस्पिटल है हाँ उसमें हॉस्पिटल में उन्होंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा है, बट उनका पैरेलली एक मेडिसिन ओके स्टोर चलता है हॉस्पिटल की प्रीमाइसिस में, जिसमें उन्होंने जीएसटी नंबर रजिस्ट्रेशन ले रखा है, और एक जो लैब ओके है उसके में भी जीएसटी नहीं ले रखा है, टेस्ट लैब वगैरह का जो ओके। रहता है। अब तीनों ये का अलग मल्टी अलग स्पेशलिटी है रजिस्ट्रेशन है। हाँ, मल्टी स्पेशलिटी है। सर। आई थिंक हम लोग है ना ये पॉइंट पे सेपरेटली डिस्कस करेंगे। वी कैन सेव ह्यूज टैक्सेस ओवर हियर इन फॉर्म Yes. ऑफ जीएसटी। आई थिंक वी विल डिस्कस सेपरेटली सर। चलो ठीक है अमन ना, भाई वी विल डिस्कस अपन करते हैं सेपरेटली। फिर। ओके पक्का ओके पक्का। ओके। एक बार ये करा दे उसमें। नहीं हो रहा है, चालू है। हेलो। सो I think Paras so CA Paras Kumar Jain have some questions, I yeah, think. yeah, हेलो। Paras. अच्छा सर, आई जस्ट वांट टू नो कि जहाँ स्मॉल क्लिनिक जो ऑपरेट करते हैं और जी. जिनका हाँ टर्नओवर अगर 5 CR तक रहता है और प्रॉफिट हाँ अराउंड रहता है इनका 70-80 lakhs तक, तो इनको हमको टैक्सेशन प्लानिंग और आगे के हिसाब से इनको वर्चुअल सीएफओ की सर्विस में पुट करना चाहिए, मेरा एक क्वेश्चन। और दूसरा कि इनको प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट करना चाहिए। सर मेरा पहला पॉइंट जो आपका है कि भी वर्चुअल सीएफओ तो ऑब्वियस है कि भी हर किसी को चाहिए अगर आप वो हॉस्पिटल को हेल्प करो। Correct. कि भी अगर वो जो अगर समझो क्लिनिक है और वो क्लिनिक में अगर वो ओपीडी कर रहा है मेजरली और प्रोसीजर्स कर रहा है और उसका टॉप लाइन इतना ही है, तो आप चेक कर सकते हो कि आप उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हो आगे जाके कि भाई वो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल या सिंगल स्पेशलिटी से स्टार्ट कर सकता है। समझो एक कार्डियक यूनिट चालू कर दे या जो भी है, तो वो एक हेल्प करके वो बूस्ट कर सकता है अपने टॉप लाइन को। सो वो एक आप उनको हेल्प कर सकते हो बाय वे ऑफ वर्चुअल सीएफओ। एंड एंड दैट विल कम सेकंड, विद एक्सपीरियंस सर। मेरा पॉइंट यही है कि आप जितना एक्सपीरियंस होगे ये चीज में तो आप वो हेल्प कर पाओगे। ओके। एंड व्हाट ओके अबाउट टैक्सेशन सर, इसमें अपने को इनको अभी स्टेज पे प्राइवेट लिमिटेड में ले जाना चाहिए और वी शुड वेट फॉर सम अपर सर, अभी टर्न? पार्टनरशिप फर्म है कि प्राइवेट लिमिटेड है? प्रॉपर्टी फर्म है सर, अभी Proprietary. प्रोप्राइटरी है। सर वही है, सिंपल है कि मैनेजमेंट मतलब उनका थॉट प्रोसेस क्या है। प्राइवेट लिमिटेड बंदा तभी जाता है जनरली जब उसको 22% टैक्स पे करना होता है या फिर बोलते हैं ना कि भाई आगे अपना फंडिंग ग्रोथ चाहिए करना या है. Yes. हाँ ग्रोथ करना है क्या है। आगे उसको और अगर अगर प्रोप्राइटरशिप, yes. हाँ मैं एडवाइस करूंगा कि उसको ये चीज पे प्लान करना चाहिए आगे। अगर उसका एक्सपेंशन Vision. वगैरह का प्लान है तो प्राइवेट इक्विटी और इस पे जाके उस पे थिंक करना चाहिए। ओके
ठीक है सर, थैंक यू। डेफिनेटली पारस जी, उसको अगर आगे अगर कोई एक्सपांशन करना है, मशीनरीज लेना है, कुछ बैंक लोन्स लेना है, तो यू नीड टू हैव द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. Because in terms of the partnership, none of the banks and these people कोई entertain. इन्वेस्टर भी आपको लाना है, कोई बंदा भी लाना है, जी. तो वो बोलेगा कि यार मेरे को क्या कैपिटल मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा. अभी क्या होता है, बहुत सारे कंपनीज में पार्टनरशिप फर्म भी होती है, तो पार्टनरशिप फर्म में भी यही प्रॉब्लम होती है कि क्या होता है कि आप जब कैपिटल के अंदर उसको रेशियो देते हो प्रॉफिटेबल, तो उसको समझता नहीं है. अगर कोई बड़ा 100 बेड हॉस्पिटल हो या जो भी हो, तो वो अगर प्राइवेट लिमिटेड तभी बनता है जब बनने के बाद उसको पता है कि मैं इनको इक्विटी दे रहा हूँ, तो उनको दिखता है कि भाई इक्विटी और करोड़ के हॉस्पिटल या जो भी फाउंडर है उनका माइंडसेट क्या है कि उसको कितना बड़ा बनाना है, क्या करना है. बराबर. Okay. ओके सर, थैंक यू. Thank you. I think so. If anyone has a question, they can put it on the, we can link up Yeah, with they us. can raise a hand also, so Yeah. we will aware of. And I think Subhash bhai, we are within a time. I think we need to conclude, and thank you all of you. thank you very much to all So of we are you. ending over here our webinar. Hope you all like it, and please share your reviews for the same. Sure. And thank you so much for joining us and supporting us. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you.